Hello, Matujima, and watching Northeast Express on HornbillTV. The National Investigation Agency on Saturday achieved another breakthrough in the investigation into the abduction and killing of 6 Naga villagers, arresting 2 more accused in a joint operation with Manipur Police and the Central Reserve Police Force (CRPF), and taking the total number of arrests in the case to 4. The case stems from the abduction and killing of 6 Naga villagers from Konsakul village on May 13. Their bodies were recovered from a forested area on June 10, triggering widespread outrage across Manipur and prompting protests by Naga civil society organizations demanding a thorough and impartial investigation by a central agency. The union government subsequently entrusted the probe to the National Investigation Agency (NIA). The latest arrests come 8 days after the NIA, along with Manipur Police and CRPF, arrested Pradeep, son of Tomba, and his wife Ayingpi, both residents of Lelon Vaipai village in Kangkokpi district, on July 10. The 2 were later produced before the special NIA court and remanded to NIA custody. The 2 accused arrested on Saturday have been identified as Longolal Vaipe, son of Pautenkam Vaipe, a resident of Lelon Vaipe village, Limakhong Kangkokpi district, and Lumintang Silhu, alias Jack, son of Paulin Silhu, a resident of Molhoi village, Limakhong Kangkokpi district. According to officials, the arrests were made during a coordinated operation by the NIA, Manipur Police and CRPF as part of the ongoing investigation into the high-profile case. Reacting to the latest arrest, Chief Minister Yumnam Khemchand Singh wrote on social media, quote-unquote, "Nobody is above the law," asserting that all those found responsible would face legal action in accordance with the law. Investigators said efforts are continuing to identify and apprehend the remaining suspects as the NIA pursues all leads to uncover the wider conspiracy behind the abduction and killings. The latest arrest marks another significant development in the high-profile investigation as agencies intensify efforts to ensure that all those allegedly involved in the crime are brought to justice. The entrance gate on one side leading to the NIT Silchar campus through Boracay Tea Garden was broken down by local villagers today morning around 7 a.m. in anger. The villagers alleged that the NIT administration had closed this gate without any prior notice, discussion or consent. This path has been the main route for residents of nearby villages for commuting to the campus and surrounding areas for years. There was a long argument between the villagers and the NIT officer who reached the spot. Local people said that snatching their convenience and rights without any discussion is not acceptable. No official reaction has come yet from the administration and NIT management. कि हम लोग नहीं, हम लोग जब पूरा प्रोसेस के अंदर जा रहे थे, ये रास्ता टोटली बोराखाई का है। रास्ता कभी भी नहीं, मतलब जो हम लोग यहाँ के जो मैनेजर साहब थे, वो लोग मतलब कभी भी रास्ता नहीं हो किया है। रास्ता कभी बंद नहीं रहेगा। ये हम लोग का डीसी साहब जो था आज से 10 साल पहले, उसने मतलब बोला था रास्ता कभी बंद नहीं रहेगा। लेकिन मैनेजमेंट जो है, NIT का जो अथॉरिटी मैनेजमेंट है, वो टोटली गाँव वाला से बिना डिस्कस किए हुए रास्ता बंद किए है। तो हमारा मुद्दा यही है कि अगर हम लोग का रास्ता बंद हो जाएगा, हम लोग बैंक में नहीं जा पाएंगे। हम लोग अपना स्कूल का जो हम लोग यहाँ पर किड्स स्कूल है, ये भी स्कूल है, वहाँ पर बच्चों लोग को लेके नहीं जाएंगे तो क्या हम लोग के कितना तकलीफ हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे बताइए। तो अगर रास्ता बंद हो जाएगा, रास्ता एक रास्ता दिया गया है टेम्पोररी रास्ता, जिसमें रास्ता की सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है, जंगल है, रास्ता पूरे टोटली टूटा हुआ है। वो साइड होकर चला जाएगा, अंदर हम लोग जा नहीं पाएंगे। ये हम लोग NIT प्रशासन से बात किए थे, लेकिन NIT प्रशासन हम लोग बात सुन ही नहीं पाते हैं, सुनते ही नहीं है। बस ठीक है ये हम लोग का मुद्दा नहीं, उसके पास जाके वैल्यू नहीं देते हम लोग का। अभी हम लोग का जो डिमांड है, वो जो पूरा गांव वाला था डिमांड पूरा कर लिया। वो अभी जो था रास्ता जो भांग दिया, ठीक उसका अधिकार है। कोई आदमी यही, अगर आपका रास्ता पर अधिकार नहीं होगा तो तोड़ नहीं सकता है। पहली मेरी बात सुनिए, कभी भी तोड़ नहीं सकता, उसका अधिकार है, इसलिए उसने तोड़ा है। आपके गिराबान में मैं हाथ कभी नहीं डाल सकता अगर मेरा कुछ अधिकार नहीं होगा। था कुछ ग्रामीण बोल रहे थे कि ये जो NIT सिल्चर बनाया गया है, ये पूरा चाय बागान की जमीन में बनाया गया है। जी, ये पूरा प्रॉपर्टी रास्ता था अभी, और ये लोग जबरन अभी बंद करे, चाय बागान के लोगों को जाने नहीं दें। जी, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी जो NIT है, ये प्रॉपर बोराखाई का एरिया है। और बोराखाई का जब एरिया है, जब बहुत पहले की बात है, जब NIT यहाँ पर बैठा था,
तो सिर्फ मतलब जहाँ पर खाली जगह था वहाँ पर NIT बैठा गया था, लेकिन रास्ता जो था वो पूरा बात हुआ था कि रास्ता जो है पूरा ऑलरेडी बोराखाई का रहेगा, यहाँ पर आप लोग जा सकते आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी NIT क्या किए हैं, आस्ते आस्ते जो है रास्ता को दखल कर लिए है, हम लोग का जाने ही नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है इसके पीछे गेट लगाने के पीछे किसका हाथ है? वो तो हम लोग का इसके पीछे गेट लगा क्या इसके, वो लोग हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग आदमी ही नहीं है, इन लोग का क्या औकात है, इसलिए बंद कर दिए। नहीं थे बोराखाई में एजुकेटेड का कमी है क्या, यहाँ का लड़का यहाँ का NIT में पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम लोग का कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और आज का जो मुद्दा है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना गांव वाला है वो तो तोड़ ताड़ दिए। इसमें मैं यही बोलना चाहता हूँ, हमारा अधिकार है, हमारा रास्ता हमें मिलना चाहिए। मैं बोराखाई का रहने वाला हूँ। यहाँ हर सप्ताह गेट को लगा दिया जाता है और गांव वाला को किसी को अंदर जाने नहीं देता। और NIT का जो रास्ता है, हम लोग को एक विकल्प रास्ता मतलब टेम्पोररी जो दिया गया, और रास्ता की तरह रास्ता नहीं, आप लोग देख सकते हैं, जाकर कैमरा पे ले सकते हैं उसको, और कोई नोटिस नहीं देता। सबसे बड़ी बात एक भी नोटिस नहीं है। और NIT का जो सिक्योरिटी कंपनी है, सिक्योरिटी कंपनी इसको डील करता है, सिक्योरिटी कंपनी इसको ये करता है। NIT की अथॉरिटी सामने नहीं आना चाहता है। सिक्योरिटी कंपनी आज है कल चला जाएगा रास्ता बंद कर तो हम गांव वाले कहाँ जाएंगे। हमको चाहिए सिक्योरिटी कंपनी से हम बात करना नहीं चाहते हैं, हमको NIT के अथॉरिटी से बात करना है। NIT का अगर अथॉरिटी रास्ता बंद किया है तो नोटिस देकर बंद करे, क्यों बंद किया, क्या रीजन है बंद करने के, ये हमको पूरा स्पष्ट चाहिए। ये जो नया डायरेक्टर है, हमने बहुत बार सुना है कि उनका लोगों के साथ, जो गांव वाले हो या आसपास के लोगों के साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं उनके आने के बाद ही ये सड़क को बंद किया हाँ, गया। ये बात सही है। तो क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहेंगे कि ये जो आसपास का जो गांव है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो या बड़े कोई उद्योग हो, उनका एक दायित्व बनता है कि आसपास के गांव को वो डेवलप करे। लेकिन यहाँ पर NIT होते हुए आज कम से कम 25-30 साल हो गया है, लेकिन गांव का NIT को से कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। इतना बड़ा संस्था होने के बाद आज हम लोग का जो गांव का चाय बागान के लोग हैं, उनको NIT के अंदर घास काटने नहीं दे रहा है। तो ये जो डायरेक्टर है, इनको मैं कहना चाहूँगा कि आप गांव वाले के प्रति इतना सख्त मतलब ना हो, सख्ती से पेश ना आए तो अच्छा होगा। The water levels of Brahmaputra river in Assam have significantly risen due to continuous rainfall. There is concern about potential threats, though it is noted that there is no immediate danger from Guwahati. While this flood is substantial, it is not as severe as the previous one, though still more than one before that. Meanwhile, further rainfall is expected, which will continue to raise water levels. During the rainy season, the increased rainfall leading to higher water levels causes difficulties for nearby residents and sometimes flooding roads. Although this flood is not as extreme as the last one, the water level in the Brahmaputra river is expected to rise further with continued rainfall. हाँ, दिन रात दोनों बरसन हो गया, इसीलिए बार नहीं बार गया। इसके लिए कोई खतरा होगा क्या? इधर गुवाहाटी से खतरा नहीं हो। इस बार ही बड़ा है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ? नहीं, आगे तो बड़ा है,
इससे तो कम है, इस बार कम है कम है। और बढ़ने के चांस है। अभी तो और बारिश होगा। हाँ, बारिश होले तो बारी हुआ। तो देखा गया ब्रह्मपुत्र नदी का पानी इस बार ज़्यादा बढ़ गया है, क्या कहना? हाँ, वो तो सही है। बारिश का मौसम में ऐसा होता ही है। आपको बारिश ज़्यादा होने से ज़्यादा पानी हो जाता है, बढ़ जाता है पानी। और आपका फिर बारिश अगर कम जाएगा तो पानी उसी तरह लेवल में, बढ़िया लेवल में आ जाता है। लेकिन बारिश जब ज़्यादा होता है तो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यही आसपास के लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। कभी कभी रोड में भी पानी आ जाता है। वैसे आपका ये मछली घाट का सामने पूरा पानी आ जाता है, वैसा ही होता है। पिछली बार की तरह इस बार भी ज़्यादा बढ़ा है कि नहीं, इस बार थोड़ा अभी हिसाब में है। मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हुआ है पानी। उतना ज़्यादा भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी जैसे जैसे बारिश आपको देते जाएगा वैसे वैसे आपका पानी, ब्रह्मपुत्र का पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह Manipur Chief Minister Yumnam Khemchand Singh on Friday met footballers who represented India in the FIFA Under-17 World Cup 2017 and reaffirmed the state government's commitment to strengthening football development and improving player welfare in Manipur. The meeting was held at the new Civil Secretariat, Manipur, where the Chief Minister interacted with the players and discussed issues related to football development, sports infrastructure and the welfare of footballers. In a statement, Khemchand said that the interaction focused on ways to further promote football in the state and address concerns relating to players' welfare. Highlighting Manipur's enduring contribution to Indian football, Khemchand said that state has consistently produced outstanding talent for the national team. The Chief Minister reiterated the government's resolve to promote sports, strengthen grassroots football and create greater opportunities for young athletes while continuing efforts to maintain Manipur's reputation as one of India's leading football nurseries. Only president club के आई मुझे पता था वो मैंने सुना जाए वो नबी जर्सी से ना club की जर्सी होने वाला हमारे जो प्रेजेंट हो गया ठीक है club की जर्सी होने वाला तो का चिन्ह मोहम्मद ने बोल कर डाला देखिए कोई की लोग बना माना तो इतना को इंश्योरेंस ना PFC की बैंगलोर की कोई ना माना पंजाब से आने वो लोग now I understand the work jadi pun sana mina ba ado hojikti loina ma club se tonga professional level do na sanga mina ma adi Manipur ki football does you appoint as you contribute away open under 17 world cup ki da funky experience mein am ji khau ke digi national team da funky ba experience mein am ji Manipur ki football da mke na chokka na ba the minus ju tawing ba abung ki jmati when decided like na hoi mapan to ju pa la da wai da Manipur da do hol si to ye event में वहाँ खल लगा तो ये साना भाई बाकी परफॉर्मेंस तो ये प्रमोशन ने लाभ पे आना बा yang mengalami kau nggak semuanya sports itu support kau ibu deh, hanya nggak itu ada ceri. But it's all the Nearly 15 lakh saplings have been planted across Manipur in just 1 week under a statewide afforestation drive, Chief Minister Yumnam Khemchand Singh said on Saturday, warning that climate change is no longer a distant threat but a reality already being felt across the state. The plantation drive formed part of the nationwide Ek Ped Maa Ke Naam 3.0 campaign and culminated at the state-level green finale of the 77th Van Mahotsav Celebration 2026 held at the City Convention Centre in Phek. Deputy Chief Minister Loshi Tiku, who also holds the Forest Environment and Climate Change portfolio, attended the program as the guest of honor.
Please be seated. Yes, that is the concern of our people, and especially our department also. We want to convey a message to them to replace with an alternative which can sustain us, all of us, the environment as well as our livelihood also. So this poppy cultivation should be immediately stopped, and the people who are going for this activity should also realize before it's too late. So our strong message to them is to stop and come with an alternative plantation to save the state, the people, environment, water, air, everything. Yes, which is now the occasion. It's a very, very important and great movement for the forest department for the state of Manipur. And we're very glad to see the response of all the community, all the people, the students, all the different people as participation in this movement. We are very, very blessed, and we want to tell our people to continue this initiative to support this initiative, to save Manipur, to make Manipur a greener state. 2 individuals have been apprehended for allegedly painting murals of activist Sonam Wangchuk on public wall near the JioTV Vishnu Auditorium in the Kanapara area. Guwahati police said they were defacing public property. The police have registered 2 separate cases at 2 different police stations. The apprehended individuals have been identified as Nakul Mili of Dibrugarh and Gaurav Singha of Guwahati. Meanwhile, in the national capital, Delhi police took away Sonam Wangchuk, who completed his 20-day hunger strike from the Jantar Mantar protest site to Safdarjung Hospital this morning.
The opposition Congress on Friday demanded a comprehensive new master plan to address the recurring problem of waterlogging in Agartala and sought the replacement of the existing leadership of the Agartala Smart City project. Addressing a press conference, Tripura Pradesh Congress Committee President Ashish Kumar Shah alleged that the state government's failure to implement effective flood mitigation measures had left large parts of the capital vulnerable to flooding during the monsoon. He claimed the Congress had repeatedly urged the government to improve the carrying capacity of the Howrah River through dredging and other flood control measures. He said residents of low-lying area continue to face hardship during heavy rainfall due to the recurring waterlogging. Several Naga civil society organizations have submitted a memorandum to Union Home Minister Amit Shah seeking an impartial central agency probe into a series of recent violence-related incidents in Manipur, a review of the suspension of operations SOO agreement with Kuki armed groups and measures to ensure impartial governance and restore public confidence in the state. The representation received by the Ministry of Home Affairs on July 17 was jointly submitted by the Indigenous Peoples Forum, Manipur IPFM, Tangkhul Naga Foothills Organization TNFO, Foothills Naga Coordination Committee FNCC, Manipur Naga Youth Organization MNYO and the Tribal Citizens Forum Manipur. In the memorandum, the organizations expressed concern over the prevailing law and order situation, stating that despite the formation of the present government, incidents of targeted killings and displacements have continued. They urged the union government to take appropriate constitutional measures to ensure impartial administration and restore normalcy at the earliest. The organization also sought an independent investigation by a central agency into several incidents, including the April 7, 2026 bomb blast at Thronglaupai in Bishnupur district that claimed the lives of a mother and her child, the killing of 2 villagers at TM Kasom in Ukhrul district, and the abduction and killing of 6 villagers from Konsakul. Referring to the Konsakul killings, the memorandum stated that the incident has been widely reported in the public domain, with allegations linking armed elements from Lelon Vaipai village and cadres of KNFP, a group under the SOO agreement. It also referred to allegations regarding the possible knowledge of involvement of certain public functionaries and noted that leaders of the Kuki Zoo Council had made statements in connection with the incident. The organization said that considering the gravity of these allegations and their implications for inter-community peace, the incidents should be investigated through an impartial judicial or central agency inquiry and appropriate action taken against those found responsible. The memorandum further called for a comprehensive review of the suspension of operations SOO agreement with Kuki armed groups, alleging persistent violations of the ground rules and claiming that SOO groups had been linked to violent incidents. It urged the centre to strictly enforce the provisions of the agreement or consider its abrogation if warranted. Among their key demands, the organizations urged the Union Home Minister to order a high-level impartial investigation by a central agency, undertake a thorough review of the SOO agreement and issue appropriate directions to ensure impartial administration, protection of all communities and restoration of lasting peace in Manipur. The representation was also forwarded to the Governor of Manipur, the National Commission for Minorities and the Union Ministry of Home Affairs for necessary action. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.